Good evening, नमस्कार. Welcome to Women Shine Live Talks, episode 51. आज का टॉपिक है ट्रॉमा एंड डिप्रेशन. दोनों ही बहुत ही डेंजरस टॉपिक्स है सुनने में लगता है, बट आज का डिस्कशन बहुत अच्छा होने जा रहा है क्योंकि हम आज बात करेंगे कि कैसे ट्रॉमा और डिप्रेशन रिलेटेड है कि नहीं है, कैसे ट्रॉमा से डिप्रेशन होता है. और आज के हमारे जो स्पीकर्स हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट फील्ड्स बट दे आर वर्किंग ऑन सेम थिंग. So before we start, few lines for you. संजीदगी पसंद है मुझे, अब फितूर से डर लगता है. अंधेरा दोस्त बन गया है, अब नूर से डर लगता है. सो डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम अंदर ही अंदर हमें एक सफोकेशन महसूस होता है और हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे चारों ओर हो जाती है. एंड देन वी स्टार्ट फीलिंग लोनली और हमें लगता है कि हमारी और उस सिचुएशन से जो कंडीशन हमारी होती है उससे हमारी पूरी लाइफ हैम्पर होती है, चाहे वो सोशली हो, प्रोफेशनली हो, चाहे वो पर्सनली हो. There's a saying which goes like this: there are wounds that never show on the body that are deeper and more hurtful than anything that bleeds. I think the sentence says it all. So yes, let's welcome our speakers because we have very interesting discussion coming up. So our first speaker is Dr. Ashutosh Srivastava. Ashutosh ji, good evening. Good evening. Ashutosh ji is a practicing clinical and counseling psychologist with over 18 years of hands-on experience in the sphere of behavioral analysis, psychotherapy, counseling, and training. He's MPhil in clinical psychology and PhD with specialization in psychological profiling. He has trained more than 10,000 professionals on a variety of attitude and behavior change protocols. He has worked with various organizations of national and international repute. He's working as Associate Professor of Clinical Psychology at Assam Down Town University, Guwahati. He has been instrumental in designing and implementing training for UNICEF, etc. Ashutosh ji, welcome to Women Shine Live Talks. We have another speaker with us. Good evening, Abhilash ji. Hi. Good evening. Namaskar. Namaskar. Abhilash Jharia is a professionally qualified transformation coach and a corporate trainer with over 20 years of experience in areas such as training and learning, coaching and mentoring. His area of expertise is in identifying and resolving roadblocks and barriers to spiritual, professional, emotional, and physical health. He has assisted organizations to assess and transform their systems and also helped many educational institutions like Malwa Institute of Technology, Indore, Amity University, Gwalior, and Prestige Institute of Management and Research to implement the industry-driven courses in their curriculum. Apart from these, he has been associated with significant numbers of companies to coach their mid-level managers. So over to you both. आज का discussion जैसे मैंने बोला बहुत interesting होने वाला है. So both the sides will bombard questions with each other and you discuss the same. So yes, over to Ashutosh ji or Abhi. Who takes the lead? It's up to you now. Thank you, Aparna ji. Thank you for having this conversation arranged and having both of us talk about such a very complicated and serious concern which most of us have around. And I would like to begin with the, asking coach, as a clinical psychologist, from a psychology perspective, we have been hearing a lot about trauma and various kind of therapies. But I believe coaching for trauma is a very new concept. So I would like to hear from you, what are your perspectives? How do you deal with it? How do you approach trauma healing and all that? Yeah, sure. Thank you, Ashutosh, and thank you, Aparna, for having me in this interesting conversation. I think it's a need of the time because we are seeing a lot of instances. We are reading a lot about the repercussion or the evil result of stress that are resulting in trauma and depression, and it is affecting more to our teens, especially the students who are
who are in much stress. So, coming to your question, Dr. Ashutosh, coaching itself is a new concept in India. Life coaching, people take it as they get confused with counseling. They take it as a counseling. It's not a counseling. It's not a therapy. Coaching is a entirely different concept. When we work with the client, the person who's having a challenge, and we work with them, how. So it's, you can say it, it's a kind of a conversation therapy. We talk together and we explore the different aspects of the challenges, and we set goals, and life coaches help to make them goals and strategies to achieve those goals, make them accountable, uh, bring back their belief in themselves. So this is what we life coaches do to help our client. And as far as the stress and stress, trauma, and depressions are concerned, we don't take it as a, as you call it, stress or depression. We take it as a challenge. We call it a challenge. If somebody comes with a problem of stress, somebody is in depression, so we don't call it depression. For us, it's a challenge. So I'm helping the person to overcome this challenge. I'm not helping him to overcome the stress. So we never state the term depression or the trauma in our conversation. This is how we take it. uh, you must be knowing, Dr. Ashutosh, you people have entirely different, a structured way of solving this problem. You have tests Yeah, that and is why I'm getting confused, because when we talk about depression, it is a disease. Mhm, And it is like any other disease. There are chemical mhm, changes, there are physiological changes in the body. mhm, So when we talk about therapies, it is sometimes combined with medication, sometimes without medication. mhm, But coaching, what I believe, I understand, is more of a facilitation of the process. mhm. Kind So of, yes. how coaching is helping people in depression and dealing with trauma, and what kind Okay. of experiential or Mhm, evidence based approaches that you people are practicing. So that will be okay. very interesting to know. Yeah. Hmm. Say, just as I told you, that it's not a therapy. We are not treating. We are not healing anybody. We are not treating. We are not giving any kind of medication. But it's a sort of conversation. Then how things goes like that. Everything, everything we are having, uh, the way we are dressing, the way we are moving, the way we are talking, everything comes from our mind. Fine. Our mood, stress, mood swings, our attitude, what we call a demeanor, it comes from our mind, right? So what we do is the change the approach, their mindset. What happens in stress, that why trauma happens. You must you will agree with me that in a state of trauma, a person stays behind the time. I mean, if something happens with a person, suppose he has lost a loved one, he had occurred some financial loss or kind of relationship breakup, something like this happened to him, he goes into the trauma. Fine. So in such condition, he gets stuck in the past. Time is moving and he gets stuck in the past, frequently recalling those instances of grief, right? So time is moving. The person has left behind in the past, right? And not only in the past, he is behaving much different from his own persona. You must be aware that somebody, if he is in trauma, he react or behave entirely differently.
he get distance from the people, he get isolated, and entirely different things. What should I say? That he suddenly he becomes entirely different person. Now, what we do to change his mind, to change his mindset, to bring him back to the present, what we call the grounding exercise. The any challenges like trauma and depression, it starts with, in our life coaching we start overcoming this challenge by uh, grounding exercise. Grounding exercises are like, bringing back to the reality. So this is the first step, and later we uh, have a healthy conversation with the client, with the person, uh, to make them acknowledge the state. in in trauma and depression, people tend to in a denial mode. So what we do is, first bring to the present by grounding exercises. These are simple exercises, like, talking with them about the present condition, not only theirs but others, talking about the present condition of the world around, or the other people. So in this way, we bring back to the ground realities, what is happening right now. So in this way, we get, we isolate that person from that challenge. This is our approach. Okay, but what literature says that Mhm. trauma is actually, if it is psychological trauma, it is a psychological wound. Mhm. And until unless that wound is healed, we may distract the person for time being. Mhm. We may, disconnect from that pain and Mhm. miseries. Mhm. But until unless that emotion is processed, that wound is healed, Mhm. it is very difficult for the person to remain in the present. There are various techniques and methods, there are various approaches to Mhm. heal those wounds and process those Yes. emotions. Mhm. But ultimately, that has to be processed. Yeah, definitely, I agree with And you. if it is causing a disease like depression, there are other consequences also, like PTSD, post traumatic stress disorder, or anxiety, or at times personality changes, personality Mhm. disorders, Mhm. dissociative disorders, hysterias. Mhm. There are various Mhm. other disorders caused due to trauma. Mhm. So all these diseases need a proper treatment. So I still miss the point that just by, until there is a structured talk protocol also that we do in counseling, there are Mhm. exercises like grounding, Mhm. mindfulness, that we integrate also. But it's difficult for me to understand. So I think you have a lot more to say about it, that how just by, disconnecting from the past experiences, a person can get healed from the depression or the trauma. Absolutely right. You are absolutely right on your point, because you are taking it as a disease. I'm not taking it as a disease. See, if it I'm is not taking. cancer, you take it or you don't take it. It is a No, disease. no. See what, that's the different of our approaches. Uh, you have your own way to acknowledge it and resolve it. Life coaching has a different way. We don't call it a That is what disease. We I'm cannot. wanting to understand. That is what I'm Uh-huh, looking forward today for uh-huh. today's It's discussion. a That it's a completely makeover of your mindset. We help you to see what you are not ready to see, although it's before your eyes. It's entirely different approach. Since you are calling it, you take it as a disease, we don't take it as a disease, we call it a challenge. And we are not healing,
as I said earlier, it's not a therapy or it's not a counseling. We don't So how will recommend. the person will overcome this depression or anxiety or any other disease? If we are not taking it disease, if you're not treating it, if you're not healing it, how will Hmm. it help? It's simply as I said, simply by shifting the mind from the past to the present. This is how the whole process goes on. It's a healthy, very very lengthy conversation. It's just not like how you are feeling and what do you do. We don't talk about the problems, in fact, uh, or the any repercussion they are having. Life coaching is a process that starts from today. It's a future oriented process. We don't talk about the challenges they are facing or the repercussion they are having. In fact, we talk about the future, we don't talk about the past. In counseling and therapy, a whole process is based on the past, what they have experienced in the past. Yeah, but in depression, there Mhm. is a lack of serotonin, which is a hormone which makes us feel good. Mhm. Mhm. There is very low energy. There is very low intention to do anything, and even if person intends, sometimes they Mhm. don't have the energy to do it. So Mhm. how we increase that? Just by doing distracting the person from momentarily. Okay, the process is not meant to change the chemical reaction, chemical composition of our body. But without that, without improving the chemical composition of the brain, Means how will the of course depression? we don't have no we don't have any procedure to you know uh, test the chemical structure before the process and uh, after the process. No, no. If somebody is having an acute trauma, no, we don't recommend to uh, uh, take refuge to life coaching. No. First of all, the person who's facing such problems must have a strong faith in life coaching and the coach. Until unless they don't have a faith and trust in the coach, the process won't work. Okay, So interesting. first, what we try to do is to build a trust with them, and only by trusting, the person is ready to talk and reveal what's they are feeling, and why 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 these things are happening with them. So it's not coming to your question. Okay, you asked about the chemical composition. We don't have any such process. It's not a healing. We are not curing a disease. It's not a disease for us. I, whatever I'm saying is based on the empirical studies and the cases I have handled in the past. Let me tell you one instance. When a person came to me and he told me that his daughter is suffering from depression, and I asked the reason. He said that he recently had a breakup, and the girl was hardly 17 years old. So it's been 1 month, and she wasn't taking any food. She wasn't talking to anybody. She got isolated. She locked herself in her room. So first, it took me 1 day to develop a trust between us, right? and and it took 10 to 15 days. So what happened that gradually the the girl had developed some grudges and resentment, which he couldn't find to articulate to anybody. It's 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 a it's a adversely affecting her mind.
So by healthy conversation, we regularly talked, and by healthy conversation, I was able to extract what was hidden in her mind. So it goes like this: we are not healing anybody, we are not curing, it is not miracle. It's just that at the time we are, you know, offering ourselves as a friend, a mentor, a guide. So by confining themselves, they can, change the perspective and the change the direction of the thought process. It goes like that: we are not curing anybody, we are not healing. Yeah. It's a merely a conversation you can call it conversation therapy, though it is not therapy at all. Okay, sounds good. Anything you want me to share or discuss with audience? Yeah, definitely. See, first of all, I want to discuss something very tragic statistics about the trauma and depression. That what I have observed, there's the most affected segment of this trauma and depression is the teens, and the age ranging from 14, 15 to 25. So hello, hello, am I Yes, yes. audible? Yeah. Actually, fine. So what I have observed, that this segment has been, greatly affected by stress and trauma. The reason, what I have found, that this is the period when these people, the teens and the students, get distanced themselves from the family. There's a lack of communication between them and the family members, and at the same time they are stressed with the load of studies, and they are expected to perform. There are huge stress on them. So this is what I have observed. What's your stand? Means, what do you how do you see Very uh, true. See, current scenario? what I see that trauma experiences are as common as human existence. Mhm. All of us have experienced some or the other kind of emotional or psychological trauma at one stage of our lives. Even Jung talks about intergenerational trauma, that the trauma our forefathers had experienced that continues in our experiences. Mhm. So trauma is a very common, uh, existence. But the difference between these youngsters, these teenagers, young adults, is that they know how to articulate and talk about them. People Exactly. in earlier generations, they also experienced a lot of trauma, but they never, talked about. Like when we were kids, getting physical abuse in the school or a home, getting beaten by parents or people around us was very common. It was very It in wasn't thing. It easy was for very us to. normal. It was Mhm. very normal. Mhm. But now those who are in 17, 16, 14, 13 years of age, for them this is something, out of the world. Even in schools, corporal punishments have been banned. Yes. So now they know what trauma is, what abuse is, what Mhm. violence is. Mhm. For us, it was very natural, normal thing. ऐसा ही होता है types. And definitely, life has become more competitive. The social fabric Complicated. is changing because the neighborhood system has already gone. Joint families are also almost gone. Even nuclear families are now having atom families. Even then, even when we are with the family members, we are hardly connected. The four They people of are, the no, they are connected through WhatsApp only. yeah. Even in a So family of four that, members. yeah, so that sense of belongingness, that sense of connectedness, that is making trauma experiences more worse and Mhm. healing very difficult. Mhm. So earlier, a lot of trauma healing was happening within the family and neighborhood and friends, environment. But now that environment is changed. Neighborhood doesn't exist.
friends are also into that competitive rat race that you can't rely they are more of a competitor than collaborator with you. Families don't have time. Physically, they don't have time because working couples are there. They are not available physically. Most of the kids are, dependent on domestic help or extended support systems. So it's very difficult for them to get healed without any professional help. Earlier, it was getting helped by, grandparents, cousins, or extended family members, or at times neighbors. So they were giving the non-judgmental ears and let them express whatever they had to. Sometimes a wise advice was there, and sometimes, this entire process was therapeutic. So many a times these trauma experiences did not convert it into a disease, be it depression, be it anxiety, or be it any other psychological disease or psychiatric disorder for that matter. But now, because those support systems are not there, these trauma experiences are getting aggravated and getting converted into a disease. Now they require a proper diagnosis, proper treatment, proper, if the need is medication or psychotherapy, or at times family therapy for that matter. So definitely things are changing. The trauma experiences of these young adults and teens are much, much worse and different from that of their parents. So that is true. They have difficult experiences, but this is the time we need to be more serious, more scientific, more evidence based in helping these kids. Yeah, I agree with you that the disintegration of joint family has played a major role in spreading this trauma and the problem of trauma and depression. Don't you think it's a kind of a lifestyle disease, if we call it a disease? Partially, you can say. Actually, trauma is not a disease. Trauma is not a disease. Trauma is a genesis for a disease. So, like lifestyle disease, we can say that if we have a healthy lifestyle, we can prevent it to an extent. Like diabetes is a lifestyle disease, hypertension is lifestyle disease, arthritis is one, thyroid is one. Similarly, depression is one, anxiety is one, OCD is, or maybe. Yeah, the reason I'm saying They this can be linked to lifestyle, but let me complete. No. But with lifestyle modification, we can minimize the risk, but we can't treat it when it becomes a disease. Exactly. Like if it is a diabetes can be prevented or delayed with lifestyle modification. But once you develop it, medication is the primary first line treatment, and with medication you can introduce various other supportive therapies, be it exercise, diet, or any else. Similarly, Absolutely. be it depression, anxiety, dissociation, or any addiction for that matter, personality disorders for that matter, they require proper medication, therapeutic intervention in addition to lifestyle modification. But The only reason, lifestyle modification, I sorry, believe, will not be enough when it is a disease. Mhm. But one thing I would like to clear here for the audience, that many times what we understand depression is actually not depression. Exactly, that's what I am going to tell you. It is I a was, depressed mood. कि आज हमारा किसी से झगड़ा हो गया तो आई एम फीलिंग लो, दैट इज नॉट डिप्रेशन. या हमारा आज नुकसान हो गया, या हमारे नंबर कम आ गए, या हमारा ब्रेकअप हो गया, इट इज नॉट डिप्रेशन. This may be a trigger for depression which is going to develop in next 2-3 weeks. So if you remain in that mood for more than 2 weeks, then it might be depression or any other disorder. It's not that today I had experienced something and tomorrow I developed depression. No, that is not depression. So we need to be very specific when we are calling these terms. Like today I had a good amount of sweets and my sugar level has gone up, so tomorrow I start saying I have diabetes. No, that's not diabetes. It has to be sustained for some time. Similarly, for psychological disorders also, symptoms have to sustain.
So if it is a disease, I believe and I insist that we must take it as a disease. When it is not a disease, we should avoid calling names it as a disease. So Okay. both the situations are different and we need to be little cautious. Mhm. So today I am feeling anxious because I am going for an interview. That is healthy. That is not an anxiety disorder. But if it is an anxiety disorder, it has to be sustained for some time. Mhm. And if it is an anxiety disorder, it needs the proper treatment. It won't be going just by lifestyle modification. Okay. The reason I'm calling it a lifestyle disease is that when we were kid, we hardly heard about depression. Means I'm talking about myself. When I was kid, when I was growing, I never saw anybody in depression. The first instance I ever heard about in my life when I was 30. So, but nowadays, every other person is in depression, and But it's no, yeah, Abhi, and just one thing. sometimes people take it as a status symbol. If you are Yeah, not in a depression, that it is what I'm means saying. there is Some of the something people have abnormal with started. you. Some of the people have started flaunting by name calling that depression. I have depression, but they don't have depression. Mhm. But when we talk about 30 years ago or 40 years ago, it's not that people did not have psychological disorders. Yeah, that had, They but were not diagnosed. So they were used to go to Bhoot, Pret, Baba, Jhado, Aglam, Baglam, Dunya Bhar ka khel tamasha and having Mhm. lot of chur and chutney. Mhm. But it does not mean they did not have problems. Yeah, there must But be now there we are must be aware, problem at that time. Google is there to tell us these are the symptoms. So a lot of people are coming as self-diagnosed depression. You Earlier, when rightly the mentioned. severity was at the peak, mild to Mhm. moderate cases did not, reported in earlier days. But now Mhm. even milder cases are coming out and they are talking about it. So if you go to any of these Jhado Khoko Baba centers, they were always full. Even Absolutely the right. medical colleges where psychiatric departments used to exist. Mhm. I remember 22 years ago when I was a student, I used to visit Lucknow Medical College, and not a single day the OPD was less than 500 for a doctor. Oh. So it was there. But now people have started recognizing, realizing it for milder conditions. And they are talking about it. They are coming up out and they are seeking help. So it does not mean it was not there. Yes, definitely prevalence has increased because life is becoming more competitive, more difficult. Social support system, which are a very good uh, cushioning effect for mental health conditions, they are collapsing. They don't exist anymore with that, strength and intensity. So definitely prevalence is increasing, but it's not that it wasn't there. It was there 100 years ago, 200 Mhm. years ago, 500 years ago, all the time. Mhm. Treatment facilities were not there. Mhm. Even today, we have hardly, ऊंट के मुंह में जीरा वाली चीज. Like 3,000 clinical psychologists are there in India. 5 to Oh. 6,000 psychiatrists are there. Mhm. So facilities are very limited. So people are not having enough facilities, enough infrastructure, enough resources. Therefore, they are going to these booth pre jada, jado pocho, pseudo professionals. But that does not mean it was not there. It is not there. They are there. The good sign is people are becoming aware and they are talking like earlier. We used to say कि अच्छा बुखार है, हरारत है, 99 is fine. After COVID, 99 is also not fine. Mhm. From the first day we have started taking medicine. So Mhm. similarly for mental health also, कि माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशंस के लिए भी लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं. Mhm. बट थिंग्स आर, आई मीन Yeah, आई सी right. बोथ द साइड्स Mhm. कि Yeah, अच्छी हो भी I रही agree है with you. I क्योंकि agree with you लोग that बाहर आ people रहे हैं, हेल्प ले have रहे हैं, more. रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं. Mhm. बट दूसरी साइड में एक नेगेटिव साइड भी ये है कि प्रॉब्लम्स और प्रेवलेंस भी बढ़ रहा है. Yeah, लेकिन आप yeah, ये right. बताइए, like suppose somebody is going into depression. See, dealing with depression is not easy, right? So is there any remedy for it? How can we deal with that?
देखिए पहले तो गोइंग इनटू डिप्रेशन जैसा कोई ऑप्शन होता नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ चॉइस. It happens. बीमारी तो हमारी मर्जी से नहीं होती ना. नोबडी सेज आई एम गोइंग इनटू कैंसर. Absolutely right. सो ये लैंग्वेज पे भी हम लोगों को ध्यान देना, बिकॉज थॉट्स हैव पावर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वी वर्क अ लॉट ऑन थिंकिंग पैटर्न्स, थिंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग, थॉट रिस्ट्रक्चरिंग. दूसरा, अगर किसी को वास्तव में डिप्रेशन हो जाए तब क्या करें? तो इमीडिएटली गो एंड गेट डायग्नोस्ड. अगर आपको लगता है आपको डिप्रेशन है, डायग्नोसिस के टाइम पे आपको पता चल जाएगा यू एक्चुअली हैव अ क्लिनिकल कंडीशन, जिसको हम लोग डिप्रेशन समझते हैं, या यू ओनली हैव डिप्रेस्ड मूड, जिसको आप डिप्रेशन समझ रहे हो अभी, पर वो डिजीज जैसी कंडीशन डेवलप नहीं. डायग्नोसिस कराते ही आपको पता चल जाएगा. If it is clinical depression, there will be treatment protocols, both in medicine and psychotherapy. You have to comply to that. अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन है और आपका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो जाता है, आप थेरेपी और मेडिसिन दोनों के साथ में चलते हैं, तो 3-4 महीने में डिप्रेशन इज कंप्लीटली क्योरेबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. किसी किसी का, क्योंकि एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स, बहुत सारे स्ट्रेसर्स ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं कि अब मान लीजिए कोई कर्जे में है और 6 महीने तक उसके कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और लोन डिमांड करने वाले उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो मेडिसिन और थेरेपी भी 6 महीने में हो सकता है ना, ठीक करता है, बट नॉर्मली इट गेट्स क्योर. और उसके बाद फिर आपके वहां पर साथ में कोपिंग रिसोर्सेज, किस तरीके से आप अपने कर्जे मैनेज कर सकते हो, रिअलाइनमेंट कैसे हो सकता है, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे हो सकती है, वो सारी चीजों पर भी थेरेपी में काम किया जाता है. तो कुछ लोगों के लिए टाइम ज्यादा लग सकता है, बट डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये डिसऑर्डर्स रहते हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं. समय किसी का कम ज्यादा लग सकता है. अब अगर पता लग गया कि डिप्रेशन नहीं है आपको एज अ क्लिनिकल कंडीशन, बट स्टिल दिस इज अ चैलेंज, इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. हमारा ब्रेकअप हो गया, अभी हम कैसे हैंडल करें? कोई हमको बीमारी नहीं हो गई, हम डिप्रेशन में नहीं चले गए, जिसको आप कह रही थी, बट वी हैव अराइव्ड अ सिचुएशन जहां पर हमारे लिए ये एनवायरनमेंट चैलेंजिंग हो रहा है. तो वहां पर मुझे लगता है जो माइल्डर इंटरवेंशन है वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं. उसमें जनरल काउंसलिंग हो सकती है, जनरल टॉक हो सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात कर सकते हैं, अपने और एक्सटेंडेड रिसोर्सेज आपके जो हो सकते हैं उनको आप काम कर सकते हैं. प्लस इस टाइम पर लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी बात अभी कोच अभी कर रहे थे, तो इट इज वेरी लाइकली कि आपको डिप्रेशन प्रॉपर शायद डेवलप ना हो, क्योंकि आप फिजिकल एक्सरसाइजेस से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने केमिकल इम्बैलेंस को कुछ हद तक रेगुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट हैज नॉट गॉन बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो कई तरीके के एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. जब आप दोस्तों से मिलते हो तो सेरोटोनिन रिलीज होता है. जब आप कुछ छोटे छोटे अचीवमेंट्स करते हो, अपनी हॉबीज को फॉलो करते हो, तो सेरोटोनिन रिलीज होता है. तो ऐसे अलग अलग हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रिलीज होते हैं जो प्रिवेंशन के तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं व्हेन यू फील दैट यू आर हेडिंग towards a clinical depression from a depressive mental state. अच्छा, जैसे डिप्रेशन होता है क्या, लाइक एंजाइटी या ट्रॉमा, जो भी हम जिसको भी हम इसको वर्ड कॉइन करें, इज इट क्या ये हमारी जनरेशंस और जनरेशंस होता है? इज इट इन द फैमिली? वो जब कभी होता है तो लगता है कि कहीं फैमिली में तो हो रहा है क्या? यस, जेनेटिक भी होता है. डिप्रेशन या कोई भी मानसिक बीमारी या कोई भी शारीरिक बीमारी, उसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं. पर प्रीडिस्पोजिशन होने का मतलब ये नहीं है कि हमको ये बीमारी होगी. अगर हमारी फैमिली में मान लो हमारे पेरेंट्स को डिप्रेशन, डायबिटीज है, तो डज नॉट मीन कि उनके सारे बच्चों को डायबिटीज होगा, दो ऑल ऑफ देम आर प्रीडिस्पोज्ड. तो वहां पर स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर आता है. हमारी जो एनवायरमेंटल कोपिंग है वो एक मेजर फैक्टर आती है कि हम कैसे अपने सिचुएशंस के साथ डील कर पा रहे हैं. अपना लाइफस्टाइल, जिसकी बात अभी अभी कर रहे थे कि हम लाइफस्टाइल कैसी अपनी रखते हैं. अगर हम लाइफस्टाइल अच्छी रखेंगे, एफर्टफुल, सोल्यूशन ओरिएंटेड कोपिंग रखेंगे, तो आई बिलीव कि जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होते हुए भी मैनिफेस्टेशन शायद नहीं. पर ट्रॉमा के एक्सपीरियंसेस का जीन से कोई लेना देना नहीं. इट इज मोर ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस. Okay. And जैसे अभी like in the beginning of the discussion, you both were discussing about like the nowadays parents, they don't, it's a society pressure. They don't want their children to go to a clinic and discuss this. जबकि उन्हें पता है कि this is happening with my child, and due to and they don't want that their child should go to the counseling sessions.
So how to deal with this kind of, because पिछले आजकल ये 5 साल बहुत में हो रहा अपर्णा है. जी बहुत बदल गया ये. पिछले 5-6 साल में इट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली. कोविड के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट दैट पीपल हैव बिकम सीरियस एंड प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, हेल्थ के ओवरऑल पर्सपेक्टिव को लेके लोग ज्यादा बाहर निकल के आने लगे हैं, बात करने लगे हैं. फिर भी यस, ग्रेजुअली जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे लोग बात कर रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि हाउ टू टैकल इट, हाउ टू डील विद इट. नहीं, बट अभी भी काफी ऐसे लोग हैं जो जैसे ये आज हम बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते रहना पड़ेगा एट एवरी पॉसिबल प्लेटफॉर्म. और जैसे ही हमको लगे, क्योंकि मेंटल इलनेसेस आर बिकमिंग सीरियस कंसर्न फॉर अस. जब हम लोग स्टूडेंट्स थे तो हम लोग पूछते थे अपने प्रोफेसर से कि ये बताइए कि मेंटल हेल्थ इतना, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम तो उसकी गहराई देख रहे हैं कि इतना मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना पेनफुल है लोगों के लिए, तो इस पे सरकार इतना बजट क्यों नहीं लगाती, इस पे इतने प्रोग्राम्स क्यों नहीं चलते, इस पे इतना एफर्ट क्यों नहीं होता. तो कहते थे कि भाई देखो, मलेरिया में, टीबी में, पोलियो में, हेपेटाइटिस में, कैंसर में लोगों की जान जाती है. मेंटल हेल्थ से किसी की जान नहीं जाती, पर आज जान भी जाने लगी है. जान जा रही है सर, कोटा में जान जा रही है. हाँ, कोटा में एग्जैक्टली, नहीं, काफी पूरे हो देश रहा में है. जान. 15 से 35 साल की उम्र में जो डेथ है, उसके 2 सबसे बड़े कारण जानते हैं क्या आप? एक्सीडेंट एंड सुसाइड. And both can be linked to mental health. People who are mentally healthy, who are mentally mature, will take calculated risk. Those who will take calculated risk will end up less in accidents. True. And suicide is So, definitely linked to mental health conditions. okay. Like Abhilash, you mentioned in the beginning that you are a life coach. You've been dealing with the students, right? So, how can one identify that one person is actually going through all these things? Because sometimes you feel that I'm not depressed, but our symptoms are like that. So, how do you identify a student? Suppose there's a group of students and they come and approach you. So, how do you identify that? Okay, this is the problem this person is facing, whereas he's not accepting it. So, how do you deal with that? Yeah, there are symptoms to identify the problem, right? First is Like what? हाँ, उनका सेल्फ बिलीफ चेंज हो जाता है. सेल्फ बिलीफ जो है नेगेटिव बिलीफ हो जाता है. दूसरा है, उनको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है. किसी भी चीज में, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी से मिलने में इंटरेस्ट नहीं होता है. दे डोंट इवन टेक इंटरेस्ट इन टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. वो सबसे डिसएसोसिएट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, रिक्लूज बन जाते हैं, राइट. और नेगेटिव थॉट्स आते हैं. नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको हर चीज में प्रॉब्लम दिखता है. प्रॉब्लम इन माई सेल्फ, प्रॉब्लम विद माई पेरेंट्स, प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, प्रॉब्लम विद द टीचर. देयर इज a lot of problem around me. Nothing good about in my life. Nothing positive happening. I cannot do anything. There's nothing left in my life. तो इस तरह नेगेटिव एक पैटर्न बन जाता है. ये पैटर्न जब आपको दिखने लगे, देन और बोरियत से लगने लगती है, कुछ भी चीज इंटरेस्ट नहीं करती है उनको. ये सारे सिम्टम्स आपको जब दिखाई देने लगे अपने आसपास किसी में, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना आउट ऑफ द वे जाके वो बिहेव करने लगते हैं, जो उनका पर्सोना नहीं है, जो उनका पर्सोना नहीं है उससे हट के वो बिहेव करने लगते हैं. अगर शांत है तो अचानक से एग्रेसिव हो जाएंगे, एग्रेसिव है तो वो शांत रहने लगेंगे. कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी आ जाती है. तो ये आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे में, या आप खुद में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार मुझे कुछ मजा ही नहीं आ रहा है, मैं कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैं कुछ प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ. If somebody is going through such phase or such thoughts of, if you are observing anybody having these signs in a surrounding, right? So
there's more likely that they're having, जैसे डॉक्टर आशुतोष ने कहा कि बताया कि ये एक सस्टेन होना चाहिए एटलीस्ट 2 वीक्स, Yeah. है ना. मूड स्विंग्स होते हैं, मूड स्विंग्स थोड़ी देर के लिए होते हैं आपके. आपको अगर डिसइंटरेस्ट कुछ लग रहा है, किसी में इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, 1-2 दिन अगर ठीक है, इट्स ओके, बट इट परसिस्ट, इट्स कंटिन्यूज फॉर more than 2 weeks, there's something wrong. Yeah. Okay. So, like, are there any measures to overcome with depression apart from counseling and therapy? If it is a disease, if it is a clinical depression, first treatment is medicine, second is counseling and therapy. Okay. If it is just depressed mood, depressed conditions, there can be 2000 things that you can do to prevent yourself reaching to the state where you are having clinical condition. It can be lifestyle modification, it can be going to friends who can listen to you non-judgmentally, unconditionally, changing your lifestyle pattern like doing exercise, walking, getting into your hobbies, distracting. A lot of these activities can be done to prevent. But once it is a disease, please, it's my request, treat it as a disease. Willpower say and motivational videos sunne se it won't change. Rather, sometimes I have seen in my past years of clinical experience, since when these social media influencers have started coming up and talking a lot about motivational speeches. Actually, motivational speeches sometimes lead you to depression. Because I agree with you, Dr. Ashutosh. if you जब आप चाहते हो अपनी पूरी शिद्दत से तो पूरी कायनात आपको मिलाने को लग जाती, नहीं होता भाई. हम जितनी शिद्दत से चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकते बिकॉज वहां का कानून अलाउ नहीं करता. somebody who is not born in अमेरिका, आज हम सिटीजनशिप ले भी लें तो भी नहीं बन सकते प्रेसिडेंट. तो पूरी कायनात भी शिद्दत से लग जाए तो भी नहीं बना सकती. तो दे आर अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग, दे आर अनरियलिस्टिक टारगेट्स बीइंग क्रिएटेड बाय दीज मोटिवेशनल स्पीकर्स. तो डिप्रेशन में वो मदद नहीं करेंगे, डिप्रेशन में वो और हर्ट करेंगे. कि आप किसी को पूरी शिद्दत से चाहते हो, भाई उसका कहीं और दिल लग गया है, नाउ ही हैज मूव्ड ऑन. अब आप जितना मर्जी शिद्दत से उसके बारे में अफर्मेशंस और दुनिया भर के खेल तमाशे करो, ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू. राइट. सो आप प्रिवेंटिव तो बहुत कुछ कर सकते हो, बट वहां पर भी आपको एक जिसको कहते हैं ना सेंस ऑफ विजिलेंस रखना है कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. तो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैन हेल्प यू, दे कैन डैमेज यू एज वेल. ओके. अच्छा, जैसे अपने आप को मॉनिटर करें. एक 3-4 पॉइंट्स छोटे छोटे और कि आप अपने आप को मॉनिटर करें. आपके फिजिकल रिस्पॉन्सेज बॉडी के चेंज हो रहे हैं क्या? भूख चेंज हो रही है, प्यास चेंज हो रही है, नींद चेंज हो रही है. आपके इमोशनल रिस्पॉन्सेज चेंज हो रहे हैं क्या? आपको गुस्सा ज्यादा आने लगा है या कम आने लगा है? आपका मन कैसा रहने लगा है? अपना इमोशनल रिस्पॉन्सेज में चेंज. अपने कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज में, यानी आपका दिमाग जो शार्पनेस थी, जो इफेक्टिवनेस थी, जो मेमोरी थी, जो कंसंट्रेशन था, उसमें चेंज आने लगा है या नहीं. और आपके थॉट्स किस तरीके के आ रहे हैं. अगर ये चारों चीजें आपके साथ ऐसा लगता है कि आप 3 दिन पहले, 6 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, 10 महीने पहले जैसे थे वैसे नहीं रह गए, तो इट इज गुड टू गेट योर सेल्फ डायग्नोस्ड. हो सकता है डायग्नोसिस के बाद कुछ ना निकले. हम लोग साल में वो फुल बॉडी चेकअप कराते हैं ना, इस उम्मीद में कि कुछ ना निकले. तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो या किसी और प्रोफेशनल के पास जा रहे हो, इट डज नॉट मीन कि आपको वहां जाना है कुछ खोजने के लिए कि कुछ निकल आए. इस उम्मीद से जाओ कि वहां जाएं, बात करें, चेक कराएं और कुछ ना निकले. क्योंकि कुछ नहीं निकलेगा तो बहुत आसान है, कुछ निकल आएगा तो भी इतना कुछ मुश्किल नहीं है. मॉडर्न मेडिसिन बहुत सेफ है, उनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है. हमारे यहाँ एक मिथ ये भी है कि दवा खाने के बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए आपको दवा नहीं खानी, और खासतौर से साइकेट्रिक दवा तो कतई नहीं खानी. तो अब वो टाइम भी नहीं रह गया. साइकेट्रिक मेडिकेशंस बहुत सेफ हैं, बहुत इफेक्टिव हैं. हालांकि शुरुआत में 2-4-10 दिन आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट किसी किसी मेडिसिन के साथ हो सकता है, पर वो बॉडी में एडजस्ट होने में टाइम लेती. 2-3 हफ्ते में आप बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेडिसिन आप खा भी रहे हो या नहीं खा रहे हो, एंड यू विल बी कंप्लीटली एट ईज.
तो ट्रीटमेंट के नाम से हमारे यहाँ पता नहीं क्यों खासतौर से मेंटल हेल्थ में ट्रीटमेंट के नाम से लोग डरते हैं। अभी भी मैं यहाँ चैट पढ़ रहा था तो कई सारे लोगों का क्वेश्चन यही है कि अच्छा ट्रीटमेंट के लिए ना जाना पड़े तो क्या करें। अरे भाई बीमारी हो गई तो आप ट्रीटमेंट के लिए ना जाने के बारे में क्यों सोच रहे हो? ये सोचो कि कौन सा ट्रीटमेंट करें और जल्दी बाहर आए, बजाय इसके कि इधर उधर भटकते रहें, झाड़ फूक कराएं, भूत प्रेत के पास जाएं और उसके बाद प्रॉब्लम को एग्रीवेट करके पहुंचे। राइट राइट। तो ये 3-4 चीजों का ध्यान रखें। और ज्यादातर जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है उसमें 2 हफ्ते का बेंचमार्क बहुत सिग्निफिकेंट है। हालांकि कुछ में एक एपिसोड पे भी हम कंसर्न हो जाते हैं, जैसे पैनिक अटैक। कुछ कंडीशंस हैं जैसे डिस्थीमिया वगैरह, उसमें हम वेट करते हैं 2 साल तक ये परसिस्टेड रहे तब हम उसको डायग्नोज करेंगे। बट ज्यादातर के लिए 2 हफ्ते का बेंचमार्क इज सिग्निफिकेंट है। तो अगर 2 हफ्ते तक आप डिस्कम्फर्ट और डिसेबिलिटी फील कर रहे हैं अपने रोजमर्रा की एक्टिविटी में, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इमोशनल हो या सोशल फंक्शनिंग में हो, तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो एंड विजिट अ प्रोफेशनल। 2-4-500, 1000, 2000 जो भी उसकी फीस है पे करिए, गेट योरसेल्फ डायग्नोस्ड एंड थैंकफुली कुछ नहीं निकलता है तो खुशी खुशी घर आ जाइए। कुछ निकल जाता है तो लग जाइए, 2-4 महीने लग के इलाज कर लीजिए। राइट। सो लाइक जैसे अभी डिस्कशन में हो रहा था कि वन शुड डू मेडिटेशन, राइट? सो आजकल जो यंगस्टर्स हैं दे डोंट हैव सो मच ऑफ पेशेंस कि आंख बंद करके शांति से बैठ सके। सो व्हाट इज अदर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिससे हम वो स्टार्ट कर सकते हैं चीजें? मेडिसिन के लिए या नॉन मेडिसिन पे? नॉन मेडिसिन के लिए। आई मीन अगर डिसऑर्डर है तो यू हैव टू गेट इनटू प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स व्हिच आर स्ट्रक्चर्ड फॉर मेडिसिन, नॉट फॉर मेडिसिन। पर अगर डिसऑर्डर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। रनिंग बहुत अच्छा है, वॉकिंग बहुत अच्छा है। You can start with gardening, you can start playing with pets, you can start simple deep breathing। पेट पे हाथ रख लीजिए और गहरी सांस अंदर बाहर लीजिए। तो मेडिटेशन के लिए आप तैयार होंगे, हो सकता है महीने 15 दिन, यू विल टेक टाइम। बट ये दूसरी एक्टिविटी या कोई ऐसी एक्टिविटी खोजिए जिसको करके आपको इतना मजा आता था या जितना मजा अभी आता है कि आप उसमें खो जाते हैं आधे घंटे। दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। आप गार्डनिंग में पौधे लगा रहे हैं और आप भूल गए देश दुनिया के बारे में कि गर्मी है, पसीना है, धूप निकली हुई है। आपको आधे घंटे उसमें ऐसा मजा आ रहा है कि आपको कुछ और नहीं चाहिए। आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप पोइट्री पढ़ रहे हैं, आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉट ऑन गैजेट्स, बिकॉज उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं। ऐसी कंडीशन में हम कभी एडवाइस नहीं करेंगे यू शुड टेक सपोर्ट फ्रॉम गैजेट्स। बट ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें आप कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएं, हाँ, जो आपको अच्छा लगता है, हाँ, जो अच्छा लगता है। ड्रग्स ले लें, नशा कर लें, मूवी देख लें, नेटफ्लिक्स कर लें, वो नहीं। पर रियल एक्टिविटी जिसमें हम हाथ पैर से कुछ कर रहे हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें हम खो सकते हैं तो दिस कुड बी एज गुड एज मेडिटेशन समटाइम्स। ओके ओके। हम लोग बहुत सारे बुद्धिस्ट स्टोरीज पढ़ते हैं, ज़ेन स्टोरीज पढ़ते हैं, तो उसमें बताते हैं कि उस 5 साल खाली उससे बर्तन मजवाए और जब 5 साल उसने बर्तन मांज लिया तो बाद में जब पूछा तो पता चला वही ध्यान था। तो आप माइंडफुली जो भी कर रहे हो उसको पूरा इन्वॉल्व होकर, पूरे माइंड के 100% इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर कर रहे हो, दैट इज आल्सो एज गुड एज बिगिनिंग ऑफ माइंडफुलनेस और मेडिटेशन फॉर दैट मैटर। Okay, now there's one more question from Devika. She wants to know, like, somebody who's familiar with depression so much that that person starts rejecting all good things, even if you try to convince that person. So ऐसे लोगों आपके पास जरूर आते होंगे, इवन अभिलाष आपके पास भी कुछ केसेस आए हैं, person doesn't want to understand anything, and even आशुतोष जी आपके पास भी कुछ केसेस ऐसे आए होंगे. So how do you both deal with such situations? देखिए, उसमें 2 चीजें स्टार्ट होती। पहली तो मेडिसिन स्टार्ट होती, क्योंकि जब ब्रेन का कंपोजिशन केमिकल का बदलता है तो अपने आप चीजें समझ में आने लगती। दूसरा है साइको एजुकेशन, की ये जो आपके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इसको पीछे साइकोलॉजिकल थियरीज एंड प्रिंसिपल्स क्या है। जब आप उन थियरीज और प्रिंसिपल्स को समझते हो तो आप अपनी कंडीशन को बेहतर समझ पाते हो। देन यू आर एक्चुअली एबल टू रियलाइज कि मुझे ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसे रेजिस्टेंसेस क्यों आ रहे हैं, मुझे ऐसी इमोशनल फीलिंग्स क्यों बार बार आ रही हैं, बार बार रोने का मन क्यों करता है, किसी चीज में मन क्यों नहीं लगता, लोगों से बात करने का मन क्यों करता है, क्यों हम डिस्ट्रैक्ट होते जाते हैं, क्यों हम सोशल विड्रॉल में चले जा रहे हैं, क्यों हमको ये लोनलीनेस की फीलिंग पकड़ रही है, क्यों हमको घबराहट हो रही है, क्यों हमको बेचैनी हो रही है। व्हेन यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ दैट,
you start becoming more and more compliant because insight आती है उससे. अभी क्या है, insight नहीं, हमें लगता है कि हम कर सकते हैं और हम करना चाहते हैं पर हम कर नहीं रहे हैं और ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं, लोग हमको इरिटेट कर रहे हैं और सब ज्ञान दे रहे हैं दुनिया भर के लोग, and I don't need a ज्ञान because I already have it. Yeah, true. तो जो प्रोटोकॉल्स बने हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव. तो ऐसी सिचुएशन जो देविका जी पूछ रही थी, दिस इज मोस्ट लाइकली द पर्सन हैज ऑलरेडी डेवलप्ड अ क्लिनिकल कंडीशन. अभिलाष, कुछ आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस आई? या इस तरह के जो लोग आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो हम ट्राई करते हैं कि वो एटलीस्ट सिचुएशन को एक्नॉलेज करें. यूजुअली लोग डिनायल मोड में होते हैं और कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है उस केस में कि वो सिचुएशन को एक्नॉलेज करें. उसके बाद हम डिफरेंशिएट करते हैं कि क्या एबनॉर्मल हो रहा है, क्या उनका एक्चुअल पर्सनालिटी, क्या थॉट प्रोसेस है और क्या डिविएशन है. ये दोनों चीजों को एक्नॉलेज करते हैं. फिर उन्हीं के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है. हम उनको पुश करते हैं सोचने के लिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है. इस तरह का एनालिसिस होता है, तब हमको समझ में आता है कि रीजन समझ में आता है कि इन कंडीशंस में इन सिचुएशंस में मैं इस तरह से रिएक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं. राइट, ठीक है. अब जब वो सिचुएशंस आइडेंटिफाई हो जाती हैं, तो उन सिचुएशंस से बचने के लिए या उन सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमारा क्या एफर्ट होना चाहिए. क्या हम उनको अवॉइड करें, क्या हमको फेस करें, या कुछ टाइम बीइंग अवॉइड करें. राइट, तो इस तरह का हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उसको फिर हम एग्जीक्यूट करने में उनकी हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे उस चीज को कि देयर इज समथिंग रॉन्ग व्हिच इज नॉट नॉर्मल टू मी, आई यूजुअली और नॉर्मली नॉट बिहेव इन दिस वे, ये समथिंग कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, वो एक्नॉलेज उनको करना पड़ेगा. वहां पे सबसे पहला स्टेप यही होता है. Okay. Yeah. So I think we have discussed a lot today about trauma and depression. And मुझे लगता है जो the summary which I got from the discussion is basically, if you are going through such things, I think it's better to go out and meet somebody, a psychologist or somebody who can really help you. हर चीज की दवाई घर पे दवाई खा के नहीं होता है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, तभी आपका ट्रीटमेंट होता है. And if your parents are not they are not they don't want that, अरे लोग क्या बोलेंगे, तो we need to convince them that look, I have a problem. And कहते हैं ना, it's okay to not to be okay. So there is nothing wrong अगर हमें कुछ इस तरह की problem है, I should go out and meet somebody who helps me. Yeah, doctor. Yeah. ऐसी सिचुएशन में thankfully nowadays we have various technology platforms. Like Practo is there. Yeah. Librate is there. इक्का केयर इज देयर. ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स ऑलरेडी लिस्टेड हैं. आप उनकी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं. मोस्टली दीज प्लेटफॉर्म्स डू चेक क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स कौन कौन से हैं, उनको आप कंसल्ट करो. तो एटलीस्ट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर, और वहां किसी को भी पता नहीं चलेगा. करेक्ट. इवन अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो अपनी पॉकेट मनी से, पेरेंट्स को भी तब पता चलेगा जब आप बताओगे. क्योंकि कहीं जाना नहीं, किसी को लेके नहीं जाना, और आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन होगा, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन को दिखा के आप मेडिसिन भी ले सकते हो अगर जरूरत है. तो पहला तरीका तो ये है. फिर आप अपने पेरेंट्स अल्टीमेटली आपके दुश्मन नहीं है. दे वांट योर वेल बीइंग. इट्स जस्ट कि दे डोंट नो व्हाट इट इज. एक बड़ा सिंपल तरीका मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, या जहां हम जाते हैं टॉक्स करने के लिए, कि आप गूगल पे एक अच्छा सा वीडियो सर्च करो अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करते हुए. आप डिप्रेशन में हो तो डिप्रेशन को लेके, एगोराफोबिया हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है, कोई भी आपकी कंडीशन, ओसीडी हो रही है, कोई भी आपकी कंडीशन डेवलप हो रही है, उसके बारे में बहुत सारा एजुकेशनल मटेरियल यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल. आप एक अच्छा सा वीडियो देखो जिसमें आप कंटेंट को प्रोफेशनली चेक कर सको, इंश्योर कर सको, और वो वीडियो अपने पेरेंट्स को शेयर करो.
कि दिस इज दिस वीडियो अबाउट एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग This थ्रू would be एंड right one. सो सारी प्रॉब्लम एजुकेशन की है। हम्म, तो पेरेंट्स को भी नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, फिर आप उनको बताओ, फिर वो कहेंगे कि अच्छा ठीक है लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा। फिर आप बताओ कि वी कैन स्टार्ट विद एनोनिमस प्लेटफॉर्म्स जहाँ राइट। पर कोई ऐसी डिटेल रिकॉर्ड नहीं होती। हम्म, थेरेपी के लिए डेफिनेटली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, बिकॉज 1-to-1 थेरेपी का जो रोल है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते, बट एटलीस्ट शुरू तो हो जाएगा एक बार ट्रीटमेंट। फिर जैसे जैसे ट्रीटमेंट आपका शुरू होगा, पेरेंट्स का साइको एजुकेशन होगा, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट इन मूविंग आउट एंड टेकिंग हेल्प, करेक्ट। है ना। और सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे आप डॉक्टर, बुखार होता है तो आप पूछते हैं ना एमडी डॉक्टर बताओ, या सर्जरी के लिए एमएस बताओ। बीयूएमएस के पास जाके सर्जरी नहीं करा लोगे अपेंडिक्स की, यू लुक फॉर क्वालिफिकेशन। या So similarly, mental health care में भी you should look for qualification. किसके पास जा रहे हैं, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है। Exactly. तो अपने आप, क्योंकि किसी ने पूछा था अभी कि हाउ टू गेट सम गुड वन, राइट। तो आप चेक करो प्रोफेशनल्स को। आप किसी भी सर्विसेज के लिए सीए के पास जाते हो, हम बोलें कि हम भी अकाउंटिंग कर लेते हैं, हमारे पास आ जाओ, नहीं आओगे ना। आप पूछोगे सीए सर्टिफिकेट है या नहीं। आप मकान बनवाने जा रहे हो तो आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट पूछोगे ना कि क्या क्वालिफिकेशन है, कि हम 20 साल ठेकेदार थे, अब हम आज से आर्किटेक्ट हो गए। तो फिर भी आप कहोगे अच्छा ठीक है, तुम्हारी डिजाइन तो हम मान लेंगे लेकिन स्ट्रक्चरल किसी से करा लेना ताकि बिल्डिंग ना गिरे। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ केयर में भी प्रोफेशनल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर रखे हैं कि कौन से लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबल हैं, कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं। आप चेक कर लो, क्वालिफिकेशंस वेरीफाई कर लो। क्वालिफाइड लोग बहुत 3-4 हज़ार क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, 10-12 हज़ार काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इट्स अ गुड नंबर, वी कैन रीच आउट एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी होपलेस कंडीशन है। तो थोड़े से प्रयास से आपको एफिशिएंट व्यक्ति मिल जाएगा। और एक चीज हमेशा बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि आपको वाइब्स मिल जाती हैं, आपको एक सेंस आ जाता है 1-2 सेशन में ही सही जगह है या नहीं। तो अगर ऐसा लगता है कि आप सही जगह नहीं हो तो प्लीज गो फॉर अ सेकंड ओपिनियन। जैसे हम फिजिकल कंडीशंस में कहते हैं, कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है सर्जरी एकमात्र सोल्यूशन है, तो आप क्या करते हो, 2-3 जगह और रिपोर्ट दिखाते हो कि अच्छा देखिए सर्जरी ही ऑप्शन है या नहीं। राइट। तो इमीडिएटली जैसे आपको ऐसा फील हो कि आपको सही वाइब्स नहीं मिल रही हैं, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, चेक फॉर अल्टरनेटिव्स। ट्रीटमेंट से नहीं भाग जाना है कि यार सही रिस्पांस नहीं मिल रहा था हम ट्रीटमेंट से भाग जाएंगे, इन्होंने कह दी सर्जरी कराने को तो हम गायब हो जाएंगे, अब हम कुछ नहीं करें। नहीं भाई, इन्होंने कह दिया तो दूसरे को दिखा लो, हो सकता है उसके पास मेडिसिन हो सकता है उसके पास कोई मशीन ऐसी हो जो सर्जरी का सब्स्टिट्यूट है, या लेस इन्वेसिव सर्जरी के ऑप्शंस हैं, कम पेनफुल तरीके। तो बहुत सारी थेरेपी में भी 2000 तरीके हैं, कोई एक थेरेपी नहीं। देयर आर वेरियस थेरेप्यूटिक मोडालिटीज एंड विद इन ईच मोडालिटी देयर आर डिफरेंट मेथड्स। तो सबकी अलग अलग ट्रेनिंग है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, हर आदमी सेम तरीके के थेरेप्यूटिक मेथड से काम नहीं करता। तो हो सकता है आपके लिए एक्स तरीका ना काम कर रहा हो, वाई कर जाए, वाई ना कर रहा हो, जेड कर जाए। तो एक्सप्लोर एंड सबसे ज्यादा रीड, बट पढ़िए, पढ़ के खुद इंप्लीमेंट मत करिए। हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन के बारे में पढ़िए, उसकी क्या मेडिसिन होती हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, सब पढ़िए। पर ये डिस्कस करिए अपने डॉक्टर के साथ और जो मेडिसिन वो बताए वही खाइए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर ने दवा लिखी, आपने कहा इसके बड़े साइड इफेक्ट हैं, कल से नहीं खाएंगे। बड़े साइड इफेक्ट है तो पूछ लीजिए जाके, जैसे ये तो सॉफ्टवेयर में लिखा है इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमने पढ़े हुए हैं, तो बताएगा हाँ ये साइड इफेक्ट होता है, पर इस साइड इफेक्ट का ये काउंटर करने के लिए हमने एडिशनल मेडिसिन ऐड करी हुई है, ये सब्स्टिट्यूट सप्लीमेंट्स का दे रखा है, या व्हाटएवर। मतलब कोई दवा खाने से नींद बहुत आती है तो डॉक्टर बताएगा ना हाँ नींद बहुत आती है, लेकिन ये हमने आपको रात में दी है ताकि आप चैन से सो जाओ, सुबह उठोगे तो आप फ्रेश रहोगे, इसका कोई इम्पैक्ट आपकी डेली एक्टिविटी पर नहीं होगा। पर आपने तो गूगल पे पढ़ा कि नींद बहुत आती है, अरे नींद बहुत आती है, दवा खा के अब हम काम कैसे करेंगे, अब हम रोजमर्रा की पढ़ाई कैसे करेंगे, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे, अब हम ऑफिस कैसे जाएंगे, तो अब हम कल से दवाई नहीं। तो ये सब चीजों से थोड़ा बचना सीखना पड़ेगा।
Okay, got it. So thank you so much, Dr. Ashutosh and Abhilash ji, for your, Thank you. Thank actually you it was for very having me. informative, Mhm. very informative session. I want to add something. Please do, The please do. best way to the the best way to avoid being in such situation like depression and trauma is to develop healthy habits. Like Dr. Ashutosh himself has said, that something creative, get involved yourself in something creative, make Yeah. it a habit. ऐसा नहीं कि हमें किसी चीज से निकलने के लिए करना है, make it a habit, something constructive. Mm-hmm. And second thing is communication. आज की डेट में बच्चों का पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन काफी कम हो गया है. कम हो गया है. इन द नेम ऑफ माय स्पेस, सबको अपना स्पेस चाहिए. हम लोग बच्चे थे तो हमें तो स्पेस नहीं मिलता था. आज के जमाने में सबको अपना स्पेस चाहिए होता है. एनीवे, बट आप अपना स्पेस रखें, कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखें पेरेंट्स के साथ में. डॉक्टर आशुतोष ने सही कहा, आपके दुश्मन नहीं है. आप भी, हम सब समझते हैं हमारे दुश्मन नहीं है पेरेंट्स. हम पेरेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में आप कम्युनिकेशन इंटैक्ट रखें और गैप नहीं आने दें. और अगर आपको कुछ चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, कुछ आप फेस कर रहे हैं, कुछ फील कर रहे हैं, एटलीस्ट लेट देम नो. सोल्यूशन वो देंगे, वो आपको, वो भी आपकी एज से निकले हैं, वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन देंगे. और आपका कम्युनिकेशन इंटैक्ट रहेगा, आपकी हेल्दी हैबिट्स रहेंगी, कुछ क्रिएटिव आप करेंगे, तो ये पोजीशन में, सिचुएशन में अगर आएंगे भी तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे. Very true. So we should be vocal about our feelings, emotions with our parents. Yes. Yeah, that's very important. और एक और एक सजेशन है कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, सेल्फ थेरेपी नहीं लें, किसी प्रोफेशनल का हेल्प लें. Correct. Don't shying away from a professional, from taking a professional help. Yeah. क्योंकि क्या है, आप सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा. जी सर, कह रहे पेरेंट्स को भी सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा. सब कुछ सुनने को तैयार है, पर हम इमोशनली डिस्ट्रेस में हैं, ये पेरेंट्स कई बार सुनने के लिए तैयार नहीं होते. Right. Yes. Understand. Absolutely. So let's wind up the session. Thank you so much. आप दोनों को, you took out so much of time on a Sunday. So really thankful to you. Thank you so much. It's my privilege to be in a conversation. Thank you, Dr. Ashutosh. Thank you. Thank you, Aparna. Bye bye. Yeah, thank you so much. Good night.